Okay, so I guess let's wait for a minute for others to join, and I guess then we can begin. Mostly, our discussion for today is promises. Okay, async await and um, like so. Previous couple of sessions we were talking about asynchronous functions and how are we going to handle that. Also, we talked about event loop, callback, and all those sort of things. Okay, so that is what we will carry forward with the promises and async await. Um, okay, any doubts like before promises? If you have, you can ask. And I guess I have shared the JavaScript topics sheet with you. If not, I will just share it. Okay, so you can check in the chat like what we have exactly. Okay, and let me open VS Code and let me drop a message that we have started, and then we can begin. Okay, so let me give a message. Hi Tavish, how is it going? Oh, mm, yes, yes. So बिहार में अभी भी नेट बंद है क्या मतलब पूरा jQuery like JavaScript right अच्छा ओके ठीक है सो लाइक टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज promises ठीक है on async await okay um, see Ajax is different jQuery is different thing ठीक है टॉपिक वाइज डिफरेंट नहीं है jQuery इज अ लाइब्रेरी ठीक है जो कि कुछ फंक्शंस हैं इट विल मेक आवर लाइफ इजियर टू गेट डॉम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर एज जो एजेक्स है ना दैट इज अ वे टू मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट ठीक है तो एजेक्स मतलब थोड़ा वास्ट है मतलब उसके अंदर हमारे कैसे हम सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बीच में सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं तो एजेक्स वो पार्ट है तो वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे वेर एज जे क्वेरी इज काइंड ऑफ मतलब ऑप्शनल पढ़ेंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है तो उस टाइप का यस यस मतलब पूरा लाइक एजेक्स मीन्स व्हाट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल तो मतलब वट एवर वी आर गोइंग टू रीड जो भी हम फेच एपीआई देखने वाले हैं आज ठीक है वो भी उसी से रिलेटेड है एंड एवरी लाइक वट एवर नेटवर्क कॉल गोज फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर दैट विल बी इन्वॉल्विंग एजेक्स एंड ऑल दोज थिंग ठीक है तो ओके सो विद दैट बीइंग सेड लेट मी open VS Code and let me give an overview of what actually a promise is and what is async await. ठीक है and ठीक है mostly we are discussing about asynchronous JavaScript. This is the first thing. ठीक है now it comes कि how are we going to handle it. So handling के mechanism क्या क्या है कैसे कैसे हम इन चीज़ों को handle करते हैं whatever we studied कि जो भी async function है that is executed with help of a callback ठीक है and
there is a separate event queue which maintains the sequence of asynchronous callbacks. ठीक है कि वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे. So there is a separate event queue which is there like implemented in JavaScript. ठीक है. So unlike the normal synchronous function जो सीधा stack में जाते हैं and they get executed and popped out of stack, like वो एक traditional way है like how the function is executed. So ऐसा नहीं हो के we have event queue which holds all the async callbacks with them. और जैसे ही हमारा normal function stack empty होता है then the function pops from क्यू इवेंट क्यू टू स्टैक और फिर वो एग्जीक्यूट होता है. तो इसलिए एसिंक ऑपरेशन जो है वो हमेशा ही बाद में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं हमारे सिंक्रोनस ऑपरेशन के बाद. ठीक है. तो ये चीज़ हमने रियलाइज किया फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ क्लासेस. ओके, moving on, what we are going to see today is something called as promises. And what exactly is promises, we'll see that also. Okay, so I will name a file promise.html. Okay, so let's write some code. कुछ code लिखते हैं. Okay, then we'll discuss it further. Okay. So by the definition, set timeout is a async operation, same as set interval is also an async operation, which makes that it will be like executed asynchronously. Means we cannot tell the order how they will be executed. That is the point. Okay. So where this promise fit in? So first of all, promise is an constructor function. Okay. So first of all, promise is a constructor function. Let's see that. Okay. Which expect which expect a function which we call as executor. Okay, which expect a function जिसको हम executor बोलते हैं. Okay, which expect a function which we call as executor. This executor has two callbacks as its argument. Okay, this executor has two callbacks as argument. One is a resolve, another is a reject. Okay, I will repeat it. Promise is a constructor function where we have an executor function passed in the constructor. The executor functions accepts two argument, two callbacks. One is a resolve callback and one is a reject callback. Okay, so this is the definition of promise and this is the syntax how we write promise. Okay, second thing, what exactly will be promise? Async operation we do not have any way to know when they are completed. Okay, either there is a failure or rejection. Okay, so we do not have anything, any synchronous way to know that part. Now the only way we did till now is to pass in a callback. But what if I want to run a synchronous operation. I want to run a synchronous operation based on an async operation. Based on an async operation. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट नोटिफाइड. ठीक है, एक एसिंक ऑपरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से कि कोई नेटवर्क कॉल है जिसमें से हमें कोई यूजर की लिस्ट मिलेगी और एनी यूजर डेटा वी आर गेटिंग और एनी प्रोफाइल डेटा वी आर गेटिंग. नाउ हाउ दिस इज अ एसिंक ऑपरेशन? बिकॉज ये एक पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन है. वेन एवर यू डू अ नेटवर्क कॉल वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि ये कब रिजॉल्व होगा, कब खत्म होगा. सेम केस विद डेटाबेस ऑपरेशन. डेटाबेस काफ़ी बड़े होते हैं. ओके, सो द सर्च एंड द क्वेरीज आर वेरी लार्जर, सो वी डोंट नो व्हेन दे विल रिजॉल्व. ओके, इफ आर रिजल्ट डू नॉट डिपेंड ऑन दैट तब तो ठीक है, जब एग्जीक्यूट होंगे तब होंगे, वी डोंट केयर. व्हाट इफ वी आर वेटिंग फॉर दैट? तब प्रॉब्लम है. It mean that what if I am waiting for any network call to complete, after that I will display something to the user. इज एंड दैट इज द सेम थिंग. जब आप किसी पेज पे लॉग इन करते हो आपकी प्रोफाइल डिटेल आती है. तो
वन थिंग इज प्रिटी क्लियर कि दिस इज एन एसिंक ऑपरेशन, क्योंकि आप लॉग इन कर रहे हो तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथराइजेशन होगा, फिर आपको आपकी प्रोफाइल पेज दिखेगी। बट इन दैट लाइक उस टाइम पीरियड के लिए इट इज वेटिंग एंड देन सिंक्रोनस ऑपरेशन में हैपन, लाइक हो सकता है कि कोई पेज डिस्प्ले कर रहा हो या फिर समथिंग एल्स टू बी डिस्प्लेड ऑन बेस्ड ऑन द नेटवर्क कॉल। सो हाउ टू डू दैट, ठीक है, हाउ टू डू दैट थिंग। सो देयर कम्स समथिंग एज प्रोमिसेस, ठीक है। सो वन वे इज फर्स्ट वे क्या था हमारा, कॉल बैक, ठीक है। जब हमने XHR मेथड देखा था, लेट्स सी XHR वंस अगेन, तो हम रिस्पॉन्स को कैसे कैरी कर रहे थे, लेट्स सी। सो जब हमने XHR देखा, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स को क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ओपन फंक्शन था। फर्स्ट स्टेप, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सबसे पहला स्टेप, क्लाइंट्स ओपन अ कनेक्शन टू द सर्वर, ठीक है। देन सेकंड स्टेप वाज क्लाइंट सेंड्स द कनेक्शन टू, लाइक क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ओके, थर्ड स्टेप था कि सर्वर प्रोसेस करता है, फोर्थ स्टेप का था कि सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने सर्वर सर्वर का कोड सर्वर पे, राइट। ओनली फिफ्थ थिंग इज क्लाइंट रिसीव्स द रिस्पॉन्स, बट क्लाइंट रिसीव्स द रिस्पॉन्स, isn't it like we do not know, the main thing is we do not know कि कब रिस्पॉन्स आएगा। इट मे टेक 5 सेकेंड, अगर स्पीड इज गुड, सो 1 सेकेंड भी लग सकता है, स्पीड स्लो है 5 सेकेंड भी लग सकता है, या फिर 1 मिनट भी लग सकता है। सो दिस इजंट इन आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। तो अभी तक कैसे हैंडल कर रहे थे, कॉलबैक्स के थ्रू, यहाँ भी कॉलबैक्स के थ्रू ही हैंडल किया हमने, कि ऑनलोड तब वर्क करता है जब कोई इवेंट अकर होता है, मतलब कि ऑनलोड में हम कॉल बैक पास करते हैं और ये कॉल बैक तब रन करेगा जब रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें चाहिए था, अगर हमें नहीं चाहिए होता कि रिस्पॉन्स कब आ रहा है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट हमें प्रिंट कराना था, इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा, ठीक है। हम डायरेक्टली इसके बाहर हम XHR रिस्पॉन्स नहीं लिख सकते। लेट्स सी, इसके बाहर अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये कॉल बैक के बाहर है, रिक्वेस्ट तो सेंड हो गई, इसका मतलब कि रिस्पॉन्स भी आ जाना चाहिए, और रिस्पॉन्स आएगा तो प्रिंट भी होना चाहिए। लेट्स ट्राई, ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, कंसोल में देखते हैं। इट सेज दैट अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो अनडिफाइंड है। ओके, ओके, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सो बिकॉज आर रिस्पॉन्स इज अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड कैसे हुआ, लाइक ये अनडिफाइंड कैसे हुआ, रिक्वेस्ट तो चली गई थी ना, इसका मतलब रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड हो गई, कॉल ओपन हो गया, सिंटेक्स वाइज सब चीज़ें सही हैं, बट रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। सी, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड एंड रिस्पॉन्स इज नथिंग, ठीक है। वेयर एज अगर मैं इसी चीज को शिफ्ट कर देता हूं, इफ आई शिफ्ट द सेम थिंग इन दिस कॉल बैक ऑन लोड मेथड, everything will work fine. See this, this is what it is happening. So callback की हेल्प से async operations को हम एग्जीक्यूट करा रहे थे अभी तक, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कॉलबैक अप्रोच। गाइस, ये चीज क्लियर हो रही है क्या, कॉलबैक की हेल्प से जो हम कर रहे हैं गाइस, ताबिज दिशान, गाइस क्लियर हो रहा है क्या कॉलबैक अप्रोच, लाइक हाउ async operation is being dealt with, ठीक है। सो सेट टाइम आउट में भी यही कर रहे थे कि सेट टाइम आउट में जब टाइमर कंप्लीट हो जाता था तो फिर हम कुछ करते थे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज, लेट्स से दैट यू गेट अ प्रोजेक्ट, ठीक है, हमें एक प्रोजेक्ट मिल रही है,
हमें कुछ फेसबुक जैसा क्रिएट करना है, ठीक है, सोशल मीडिया साइट हमें बनानी है। हाउ डू दे वर्क, ठीक है, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने क्या किया, लॉगिन रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, लॉगिन रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ठीक है। लॉगिन के ऑन लोड में, लॉगिन के ऑन लोड पे हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉल बैक लगा दिया हमने, जैसे यहाँ पे लगाया था, सेम काम में होता है, ओके, यू कैन, इट्स द सेम थिंग, नथिंग, नथिंग डिफरेंट। ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आगे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बट एक अलग से एपीआई है, फेच एपीआई, जिस जो बिहाइंड द सीन्स यही काम करती है, ठीक है। सो इसके अंदर हमने ऑनलोड रखा, ठीक है। जब लॉगिन हुआ तो ऑनलोड में हमने रिस्पॉन्स रिसीव किया, ठीक है, ओके। लॉगिन के बेस पे इफ लॉगिन इज सक्सेसफुल, यानी कि अगर ऑन लोड में सक्सेस आ गया है, तो ही मैं प्रोफाइल वाली कॉल करूंगा सर्वर को, देन ओनली आई विल गिव अ प्रोफाइल, मेक अ प्रोफाइल रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब प्रोफाइल के ऑन लोड पे, प्रोफाइल के ऑन लोड पे हमें सर्वर से मिला रिस्पॉन्स कि ठीक है, वेरिफिकेशन इज डन, आपने प्रोफाइल की रिक्वेस्ट की थी, ये रही यूजर प्रोफाइल। कुछ ऐसे ही होता है फेसबुक लॉगिन पे। वंस योर प्रोफाइल इज अप, फिर आपको टाइमलाइन डेटा दिखना चालू होता है, आपके वॉल पे जो भी पोस्ट होते हैं या फिर कमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखना चालू होती हैं। और फिर इसके ऑन लोड पे आपको रिस्पॉन्स रिसीव होती है और फिर आप उसको यूज़ करते हो अपने पेजेस में। अभी देखेंगे कैसे डाउन मैनिपुलेट करेंगे हम। आफ्टर दिस, लेट्स से कि टाइमलाइन पूरा हो जाने के बाद, टाइमलाइन पूरा हो जाने के बाद हमारे पास चैट वाला जो सेक्शन है वो लोड हो रहा है और उसके ऑन लोड में कुछ आ रहा है। सो दिस इज वन वे टू मेक द रिक्वेस्ट। ये एक तरीका है पेज को क्रिएट करने का, कि जब सक्सेस हो जाए तो ऑनलोड को चेक करते रहो, ऑनलोड में प्रोफाइल कॉल, प्रोफाइल कॉल के अंदर ऑनलोड में टाइमलाइन कॉल, टाइमलाइन कॉल के अंदर चैट वाली कॉल, एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरह से ही हो रहा होगा, ओके। इसी तरह से हो, मतलब ऑब्वियसली एक ही वे है हमारे हमें रिस्पॉन्स पाने का, दैट इज कॉल बैक। तो कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको हम नेस्टेड कॉल बैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको नेस्टेड कॉल बैक्स हैं ये, ठीक है, नेस्टेड कॉल बैक्स। अगर ये हैप्पी फ्लो है, मींस अगर सारे के सारे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हैं, वेल एंड गुड, सारी चीजें सही हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस, प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि कोई रिक्वेस्ट अगर फेल कर गई ना, इफ वन रिक्वेस्ट फेल्स, सो इट विल बी वेरी हार्ड टू डिबग कि कौन सी रिक्वेस्ट फेल हुई है, क्योंकि इसके नीचे के सारे फेल करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि चैट फेल किया, कि टाइमलाइन वाली रिक्वेस्ट फेल किया, फिर प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट फेल करी। सो दिस इज वन इशू कॉल बैक वाले अप्रोच से। एंड call back inside call back is very like not a good way to write code। इसको मैनेज करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट होगा अगर हम नेस्टेड कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स लेके आएंगे। दैट इज वाई, इसीलिए इस तरह के कोड स्ट्रक्चर को हम कॉल बैक हेल बोलते हैं, या फिर इसको हम पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ डूम और कॉल बैक हेल बोलते हैं इसको। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे कॉल बैक अप्रोच के साथ था, कि भैया एसिंग के साथ अगर हम कॉल बैक यूज करें, सो दिस इज वन प्रॉब्लम। गाइस ये चीज क्लियर हो रही है क्या? ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉल बैक्स, हमने कहा कि ठीक है, लीव कॉल बैक, वी हैव अदर वे टू हैंडल दीज एसिंक ऑपरेशंस,
ठीक है, तब हमें मिला प्रॉमिस। ओके, नाउ प्रॉमिस एक्सेप्ट्स अ कॉल बैक, जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। इसको हम प्रॉमिस में एक फंक्शन पास करते हैं जिसको हम एग्जीक्यूटर फंक्शन बोलते हैं, कॉल बैक पास करते हैं। और इसके अंदर होता है रिजॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर होता है रिजॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, लेट्स प्रिंट प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस प्रिंट करा के देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। ओके, तो ये है प्रॉमिस इन, लिखा हुआ है पेंडिंग। ओके, लेट विल सी व्हाट इज पेंडिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अब रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस एग्जीक्यूटर फंक्शंस एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट, एक है रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। ठीक है, सो एंड रिजॉल्व एक्सेप्ट्स अ वैल्यू। ठीक है, ये दोनों ही कॉल बैक्स होते हैं। तो अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, देन आई कॉल दी प्रॉमिस, लिखा हुआ है फुलफिल्ड। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है आई एम रिजॉल्व। एक और है, तो ये तो कि रिजॉल्व रिजेक्ट। ओके, सो ये कह रहा है कि प्रॉमिस रिजेक्टेड, और हमारे पास एक एरर आ गई बिकॉज हमने रिजेक्ट किया। सो रिजेक्ट मीन्स वेन एवर देर इज एनी एरर, सो हम प्रॉमिस रिजेक्ट का यूज कर रहे होता है। ओके, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग एरर ओवर हेयर। ठीक है, सो प्रोमिस इज इन टू स्टेट। ठीक है, प्रोमिस की टू स्टेट्स होती हैं। ठीक है, प्रोमिसेस की टू स्टेट होती हैं। द फर्स्ट स्टेट इज पेंडिंग, द सेकेंड स्टेटस फुलफिल्ड। ओके, या तो पेंडिंग स्टेट में होगा, नहीं तो फिर फुलफिल्ड स्टेट में होता है। ओके, नॉट फुलफिल्ड, पेंडिंग एंड सेटल्ड। ठीक है, सेटल्ड में दो स्टेट होता है, एक होता है फुलफिल्ड, एक होता है रिजेक्टेड। ठीक है, so, जब तक रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट कॉल नहीं होगा तो तब तक वो पेंडिंग में होगा, अदरवाइज वो फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड में होगा। सो अगर रिजॉल्व है तो फिर फुलफिल्ड, अदरवाइज रिजेक्टेड। ठीक है, ये तो गई फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका यूज कैसे करने वाले हैं एग्जैक्टली वो देखते हैं। ठीक है, अभी तो डेफिनेशन हुई थी, इसका यूज कैसे करेंगे एसिंग फंक्शन के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई गेस कुछ चीज़ें हैं आगे। सो फेच एपीआई इज हियर। ठीक है, देखते हैं, इसके बाद देखते हैं फेच एपीआई। ओके, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो पेंडिंग स्टेट सेटल्ड है और फिर आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लेट्स ट्राई टू यूज promise. Okay, let's try to use promise for a asynchronous operation. ठीक है, set timeout, and inside this let's say that I want to okay, I want to run a function. Okay, and let's say this has to be executed after 3 seconds. Okay, the function
should be console.log. Okay, and लेट्स से दैट इट इज रिजॉल्व. ठीक है. सो 3 सेकंड बाद इसको रिजॉल्व करा रहे हैं. ठीक है, 3 सेकंड बाद इसको रिजॉल्व करा रहे हैं एंड लेट्स सी कि सो सिंस दिस एग्जीक्यूटर इज अ कॉल बैक, सो इसके अंदर हम कोई भी फंक्शन रन करा सकते हैं. ओके, एनी एसिंग फंक्शन कैन बी, एनी एसिंग फंक्शन या फिर सिंक्रोनस फंक्शन हम रन करा सकते हैं. द पॉइंट इज आइदर यू कॉल रिजॉल्व और रिजेक्ट टू फुलफिल द प्रॉमिस, अदरवाइज वो पेंडिंग स्टेट में रह जाएगा. ठीक है, सो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा के देखते हैं what is being printed exactly. सो प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेट में है. ठीक है, इनिशियली. देन इट इज रनिंग आफ्टर 3 सेकेंड. ठीक है. ओके, सो आई एम सेइंग दैट आई हैव थिंग्स अंडर कंट्रोल. मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, इससे पहले जब हम कंसोल कराते थे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग. ठीक है, आई एम आफ्टर प्रॉमिस. ठीक है, आई एम आफ्टर प्रॉमिस and here I say I am before promise. Okay. So console का order क्या होगा guys? How will be the console printed? Okay. Okay. Then inside one. Okay. Makes sense. Let's run it and check. So before, after, and then this is getting resolved. So you'll say, sir, the default behavior was also this. This is also this. So what is the use of promise? If I took out this, that is the same thing. So what is new here? Let's see this. Now, now I want to run this. After this is done, now I have a way to do that. Promise object, okay, until and unless it resolve, it provides me some methods which I can use. Not callbacks. There are some methods which I can use. The first method is dot then. Dot then is the method, and if I run this in dot then, let's do this. Okay, now let's see what is being printed. See, we are running a synchronous task after an async task. It means that we can wait for network response also and do any operation after that. Yes, obviously we can do that. Obviously, we can do that. So this is what promises are used for. Now, after will not run till this is done. Once this is done, then it will run. Yes, 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 yes. Obviously, obviously, obviously. That is what behind the scene is. Okay, so that is one synchronous operation. Okay, so manipulating the DOM going as a synchronous operation. Okay, and even if you want to run that after a async task, so that is what we are controlling here with help of promise. Getting the point? Why promises
like how promises will help us. Okay, see this. I guess I received the value also. Let's see. Okay, so whatever there is in resolve, it is passed as a return to, it is returned to the dot then, and dot then is have this value under this one. Okay, not only resolve, not so you'll say sir network कॉल हमेशा सक्सेसफुल तो थोड़ी होगा, कभी तो फेल भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है. So on that case we have reject callback. So and you can pass error also, ठीक है, आप यहाँ पे error pass कर सकते हो. You can pass any value or whatever you want, ठीक है. Now a reject is being passed. Okay, okay, dot then will not receive reject, उसके लिए हमें डॉट कैच यूज करना पड़ेगा. And dot catch needs a reason. See, it is saying reject. Okay, whatever is passed over here it is. So जब भी रिजेक्ट करते हैं ना, तो ये सारे ये डॉट देन जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है. सो ये सीधा डॉट कैच में जाता है, तो बीच में कितने भी डॉट डॉट देन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, it will go to dot catch. So reject means like error. So it is cached over here. So this is, yeah, वेरी करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ठीक है. सो नेटवर्क कॉल से हमें सिर्फ रिस्पॉन्स आएगी, राइट, कि हमें तो सिर्फ रिस्पॉन्स आएगी. सही बात है. ठीक है. सो व्हेन टू रिजेक्ट एंड व्हेन टू रिजॉल्व, there is some things I need to discuss. Where is it exactly? I guess I have it over here. Okay, so we have the method, then JSON, HTTP, type type of request we discussed, fetch API is left. Okay, response codes. Remember response codes? जब भी कोई नेटवर्क कॉल होती है ना, तो रिस्पॉन्स कोड आते हैं बैकएंड से, सर्वर से. सो जब हमारा सक्सेसफुल रिक्वेस्ट होता है तो फिर 200 टू 299 के बीच में वो कोड आता है. जब फॉल्स होता है, लाइक इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर 100 से 199. रीडायरेक्ट यूआरएल, कभी कभी रिडायरेक्शन होती है यूआरएल में, तो रिस्पॉन्स कोड में ये आता है. और जब क्लाइंट एरर होता है, यानी कि फ्रंट एंड एरर होता है, तो 400 आता है, और बैक एंड एरर होता है तो 500 आता है. तो इससे हमें पता चलता है, तो वी कैन मैप इट कि कब इसको रिजेक्ट करना है और कब रिजॉल्व करना है, बेस्ड ऑन द व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम बैक एंड. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेटस दिख रही है, सो सारे कॉल्स में स्टेटस होती है. ठीक है, सक्सेसफुल होगी तो सक्सेसफुल होगी, फेलियर होगी तो फिर 400 होगी. ओके, लेट्स सी कोई फेल्ड रिक्वेस्ट है क्या. ओके, सो दिस इज फेल्ड रिक्वेस्ट. ठीक है. ओके, सो ये कैंसिल्ड रिक्वेस्ट है. सो सो बाई दिस, ओके, देर इज अ रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो ये 304 है. तो बाई दिस वी नो कि कब रिजेक्ट करना है, कब रिजॉल्व करना है. सो इसके ऊपर हम मैप कर सकते हैं. ठीक है. So इसको हम लाइक स्टेटस कोड बोलते हैं, लाइक बेस्ड ऑन लाइक व्हाट वी हैव एनी नेटवर्क कॉल्स. ठीक है. ये क्लियर है क्या.
यस यस, हम अपने पेज में भी तो वही करेंगे ना। लाइक यू हैव सीन दैट कि कभी कभी दिखाता है इंटरनल सर्वर एरर या फिर फॉरबिडन। तो फ्रंट एंड में हैंडल करते हैं हम उसको, कि बैक एंड से जो भी आ रहा है तो हमें फ्रंट एंड पे हैंडल करना पड़ता है, ताकि हम यूजर को बता पाएं कि दिस पेज इज टेम्परली डाउन, प्लीज ट्राई अगेन एंड समथिंग समथिंग। यस यस, नॉट फाउंड वाला कॉल है, इसी में कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। मतलब कुछ और आया होगा, लाइक इन्होंने हैंडल किया लाइक फ्रंट एंड पे, ठीक है। सो इस वजह से ये फेल नहीं हो रहा, बट ओके नहीं, सी 404, ठीक है। ओके, हाँ, यस यस, ओके, ठीक है। और भी डिस्कस करेंगे नेटवर्क के लिए, अभी प्रॉमिस देख लेते हैं, फिर और भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द नेटवर्क थिंग, ठीक है। द पॉइंट इज प्रोमिसेस आर नॉट ओनली फॉर नेटवर्क कॉल्स, ये सिर्फ नेटवर्क कॉल्स के लिए नहीं है, ये एसिंक ऑपरेशंस के लिए है। मतलब आई आई होप यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट, कि किसी एसिंक ऑपरेशन के बेस पे हमें कोई काम करानी है। ओके, देयर इज अ डिपेंडेंसी, अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, लाइक गो इट, लाइक रहने दो जैसे, ओके, जस्ट आफ्टर इट, बट वी वांट इट टू, we want to run something after any async operation, then we have to either go with callback or we have something called as promises with us। promises हमें डॉट देन देती हैं, डॉट देन कैच देती हैं, ठीक है। डॉट देन डॉट कैच आर ऑल्सो एसिंक्रोनस इन नेचर, वो एसिंक्रोनस होते हैं, ये दोनों डॉट देन और डॉट कैच भी एसिंक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये दोनों भी एसिंक्रोनसली ही रन करते हैं, एंड वी कैन हैव डॉट देन मल्टीपल डॉट देन, ठीक है। सो डॉट देन के बाद फिर से डॉट देन लगा सकते हैं ठीक है। हम डॉट देन की चेन बना सकते हैं। तो रिमेंबर द प्रॉब्लम, अभी जो हमने डिस्कस किया फेसबुक लॉगिन के साथ, कि लॉगिन हुई, लॉगिन के बाद प्रोफाइल रिक्वेस्ट के ऑनलोड पे टाइमलाइन, टाइमलाइन पे चैट, या फिर टाइमलाइन पे पोस्ट कमेंट, फिर कमेंट लाइक पोस्ट, फिर पोस्ट के बाद कमेंट, कमेंट के बाद लाइक्स, ठीक है। यही यही सीक्वेंस होगा अगर पेज रेंडर कर रहे हैं तो। सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे, ठीक है। कॉलबैक्स, नेस्टेड कॉलबैक्स हो जाएंगे, और ये कॉलबैक हेल बोलते हैं इसको। इंस्टेड वी कैन यूज लॉगिन डॉट देन प्रोफाइल डॉट देन टाइमलाइन डॉट देन चैट, ठीक है। क्लीन क्लीन कोड, ठीक है, काफ़ी क्लीन कोड है, लाइक कोई कॉलबैक्स नहीं है, नथिंग ओवर हियर, ठीक है। आप डॉट देन डॉट कैच लिखो, एंड इवन यू कैन कैच द एरर ऑल्सो, आपके पास कैच मैकेनिज्म भी है, ठीक है। सो पहला नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखो, फिर दूसरा यहाँ पे लिखो, तीसरा यहाँ पे लिखो, सो ऑन, सो फिर यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ओके। what is received by dot then dot catch, so dot then dot catch response रिसीव करती हैं जो प्रीवियस प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो भी प्रीवियस प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इनको वैल्यू मिलती है, डॉट देन को वैल्यू मिलती है, और डॉट कैच को एरर का रीजन मिलता है, ठीक है, क्यों ये फेल हो रहा है एग्जैक्टली। सो डॉट देन डॉट कैच आर एसिंक्रोनस इन नेचर, ठीक है। मल्टीपल डॉट देन डॉट कैच हो सकते हैं, ठीक है। डॉट कैच और भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो ये हो गई लाइक चेनिंग ऑफ लाइक डॉट देन, ठीक है, डॉट देन की चेनिंग है, एसिंक टास्क की चेनिंग है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हो गई हमारी प्रॉमिस। व्हाट एल्स डू यू हैव, इसको फेच एपीआई से करने की कोशिश करते हैं। ओके, वन वन मोर थिंग, ठीक है, प्रोमिसेस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। लेट्स से दैट कि प्रोमिसेस किसी फंक्शन में यूज करनी है, ओके, ओके 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 ओके, ठीक है, ओके। लेट्स से देयर इज अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन है,
The function name is add and display. Okay. The function name is add and display. Okay. The point is कि there will be a count. ठीक है, एक count होगा यहाँ पे. After every 1 second. Yeah. After every 1 second, I will increase the count. Okay. Or let's say I want to increase the count after 4 seconds. Okay. After 4 seconds, I want to increase the count. And uh, also also I want to return the count. ठीक है, मैं count return भी करना चाहता हूँ. Okay. So then I want to display it. ठीक है, जब add हो जाए फिर increment हो जाए then मैं इसको display करना चाहता हूँ. So I can write a promise जैसा हमने previous part में लिखा. ठीक है. Okay. Resolve reject. ठीक है. Okay. And I want to return from the promise. So promise से return करने का जो way है, we can, I want to return the count. So simply what I can do here is resolve. Okay. The resolve count. Okay. Let's cut this. So I want to resolve count. Okay, and then I want to return it. Now this promise is having a set amount जिसका काम है काउंटर को इंक्रीमेंट करना आफ्टर 4 सेकेंड एंड देन रिटर्न दी वैल्यू. ठीक है. नाउ ऑल्सो आई वॉन्ट टू नॉट टू डिस्प्ले हेयर, मैं किसी और फंक्शन में इसकी वैल्यू को देखना चाहता हूँ. ठीक है, अगर मैं इसी फंक्शन में प्रिंट नहीं कराना चाहता, आई वॉन्ट टू मेक इट अ फंक्शन विच कैन बी यूज एल्सवेयर, कहीं और भी यूज हो सके. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है. ऐसे if I want to use this function uh, display result, I want to compute in other function. ठीक है, and I want to see the result in other function, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. ठीक है. I can call add and display. ठीक है, फिर मैं add and display कॉल करूँगा. ओके. whenever I call add and display I am getting a promise here. ठीक है, मुझे promise मिलेगा और इस पे मैं डॉट देन लगा सकता हूँ. ठीक है, इस पे मैं डॉट देन लगा सकता हूँ. एंड ऑल्सो आई कैन प्रिंट इट. नाउ दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस. ठीक है, अब ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर, तो ये फंक्शन खुद एक एसिंक वे में वर्क करेगा. ठीक है, एंड इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पे हम किसी फंक्शन को या फिर किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू को देख सकते हैं. So I can simply run this. Okay. Also, I need to call this function display result function. ठीक है. Okay. And why is that? Because हमें ये करना है. ठीक है.
अब सही है. ओके. डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन हमने कॉल किया. एंड सी द काउंट इज इंक्रीज्ड. सो ये है फंक्शन प्रॉमिस को रैप करने का तरीका, कि जब आप यूज करना चाहो तभी, लाइक आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखोगे तो प्रॉमिस रन करने लगी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट रन करने लगी, बट यू कैन रैप इट इनसाइड अ फंक्शन. ठीक है, एंड यू कैन यूज इट इन अदर फंक्शन ऑल्सो. So this is one way to do things. Okay. So next part comes over here. So let's see. Let's make a API call. ठीक है, एक API कॉल करते हैं. We did XHR last day. ठीक है, XHR कॉल करी हमने. Let's make an API call with something new we are going to study today. We call that as fetch API. ठीक है, we call it a fetch API. Fetch API is used to make network calls, okay, make network calls and handle them in a like suitable manner. Okay, whatever responses are there, errors are there, to handle them in a suitable manner. So how can we make a function which returns a promise? We just see that. Any doubts in this, guys? How can we make a function return a promise? I guess now we are able to create our own functions, promise functions. Over here in dot then whatever resolve is having inside it, it throws to dot then. And if I want to get this, I get this in argument. So JavaScript provides whatever is returned by resolve function in this argument, first argument, and that is what being printed. Similarly, if you are getting a response from the server, so resolve will pass the response to resolve, and that will only throw the value in here, so you'll get the response. Hmm. Oh yes. Hmm. Yes, yes. We are going to do that. We are going to just do that. Let's do that also. We are going to study about fetch API. We already made a call last session with what? What function we use in the last class? XML HTTP request. Remember XHR request we made? Fetch API is similar to that, and also fetch. Okay, just fetch. Second comes the URL. Okay, so let's get the URL. I will use the most famous URL, which I use every time. Uh, okay, let's open this. I do not need to sign up though. Okay, I've already signed up, so I have the API. Okay, I will copy this. Okay, copy. Let put in fetch. Okay, that's it. So fetch API, the first argument is the URL. The second argument is starts. The second argument starts with method. So since it is a get method, no worries. Okay, we discussed about method last day or not? Okay. Um, okay, let's leave this part for now. So fetch receives the
let have the URL and it will try to make a request. Also, based on uh, this request will fetch me. What will this request fetch me? Let me check this. So this is fetching me something over here, and I'm having any HD URL which is having an image URL, and I want to display this image in a image tag. ठीक है, मैं एक image tag में इस image को display कराना चाहता हूँ. So let me create a button. ठीक है, एक button create करते हैं which will trigger this. ठीक है, जो कि इस function को trigger करेगा. Okay, so let's name it get image. Okay, and also let's have a image. ठीक है, एक image रखते हैं. इसकी source होगी blank, height होगी let's say 500 and width होगी 500. So I want to display the image URL जो मुझे response में मिल रहा है. ठीक है, जो API कॉल करूंगा मैं get image के कॉल पे. तो let me call get image. Get image. So ये होगा एक function. ओके, सो गेट इमेज कॉल होगा जब हम बटन क्लिक करेंगे. ओके, एंड तब हम इस इमेज को फिल करेंगे. ओके, लेट्स गिव इट आईडी सो दैट वी कैन मैनिपुलेट द डॉम. आई विल से इमेज. नाउ the fetch is this fetch function is a promise. और क्या रिटर्न हो रही है हमें? रिस्पॉन्स. ये एक फेच फंक्शन खुद भी एक प्रॉमिस है जो मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है. ओके, सिमिलरली ये भी एक प्रॉमिस हमने क्रिएट किया था. सो जैसे हमने ये प्रॉमिस क्रिएट किया है वैसे ही एक फेच एपीआई विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर अस, जो हमारे लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है. बट इसको हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे डॉट देन. डॉट देन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रिसीव होता है? हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है. एंड उस रिस्पॉन्स को हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो टेक्स्ट वाली रिस्पॉन्स है. तो हम कहेंगे लेट पार्स्ड रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन. ठीक है, रिटर्न पार्स्ड रिस्पॉन्स. ओके, ओके. Sorry guys, I cannot use a response dot json, can I? We haven't seen this yet. Okay. Okay. So again, this is a response which has this, and once this is done, okay. So dot then, should I do this?
Okay, give me a minute. Any other ways I can use dot then? Okay, makes sense. I do not have to. Okay. Finally, this response, whatever I am going to get here, finally, whatever I am going to get here, I will say document dot get element by ID, the ID of my image dot set attribute dot source comma response dot what was the field which had the link. Okay, let's see it here. Okay, status code 200 success. This is preview, this is the data. So we have something called as HDURL. So response dot HDURL. Okay, so we make a fetch request, then we parse the response, then we add it to our image. Okay, let's run the file. I have something called as get image here, right? Let me click this get image. Okay, so whenever I click on get image, there is a network call going. Okay, and I'm getting the HD URL here and which is being imposed here. So we see that this won't be possible, ये possible नहीं होता अगर हम dot then use नहीं करते थे, because this is asynchronous and we have to run based on both of them after they are completed. So that is how dot then and promise is helping us, and this is how we handle fetch API or network response using promises. So this is a promise based API. Is it clear, guys? Okay. Okay. So fetch API is to make network calls, ठीक है, किसी सर्वर पे कॉल करने के लिए, which is a async operation. The point is, since it is async operation, so how do I know कि when the call will be complete? If it is a XHR request, then I have to do this in on load. ठीक है, on load पे करना पड़े, और callback है on load. So in order to replace that, we have promises. So promises says I have dot then. Please use dot then. Okay. So even if something fails, we know key where to reach. We have dot then dot catch. So promise fetch is a promise. When it is done, then it returns a response. Then this is done, and after this is done, after it has passed the JSON, which is also a promise, it returns the response, and this is being used in our page. So we are doing a operation based on an async operation, किसी asynchronous operation के base पे हम कुछ कर रहे हैं. So we have dot catch over here, and it will receive error, and we can say console dot log, and finally
error. Let's try to generate a error. Okay, so this is not creating an error. Let me do a error. Okay, so I just change the URL. Let me hit this again. See 404, and in the console I am getting syntax error, get API call, this is not found, and syntax error. We are getting an catch over here. So gracefully it is handling the issue. Okay. Yeah. Yes. So fetch is having its own mechanism. So this is caught error, right? It is not uncaught error. Make sense? Like we are catching the error. Otherwise यहाँ पे uncaught error लिखा होता, right? एंड आवर ऐप विल ब्रेक. सो ऐप कब ब्रेक करता है? जब ऑन अनकॉट एरर होता है, जब आपने कैच यूज नहीं किया होता है. ठीक है. सी अनकॉट एरर. सो तब ऐप ब्रेक करता है. कैसे? लेट मी शो यू समथिंग. ओके. एनीवेज इट विल नॉट एग्जीक्यूट. ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा ऑब्वियसली. ओके. जावास्क्रिप्ट इज इटसेल्फ कंप्लेनिंग. जावास्क्रिप्ट तो कंप्लेन कर ही रहा है कि इट इज. Yeah, JavaScript is itself complaining that is a syntax error or something. But when we do this, no complaints, nothing. Okay, see this. ये हुआ ना इसके बाद. अगर ये सेम काम मैं इसके बिना करूं, so I guess I would be getting the error. ठीक है. Okay. So this is not being read yet. Okay. ठीक है. मतलब यही पॉइंट है कैच करने का. Okay, let me run something after this. Yes, yes, let me run after this because this is already initiated. ठीक है, ये पहले ही start हो चुका है, इसलिए वो सही से चल रहा है. Some other code which I want to call. Okay, let's call this e dot then okay, I guess it would be fine. ठीक है, let's run this. Where am I getting the error exactly? And why is that? Why am I getting an error exactly?
Okay. Okay. So ये यहाँ तक सही है. Then we have dot then. Then इसके अंदर we have this added and display. Then finally we have dot then, which is getting a value to console. Okay, let's see. Okay, so that one is not coming, which should have come. Now, if I do this, let's do this and check. Will it work now? Okay, let me again do this. Yeah, see, one is coming. Uh, guys, you see this? Like this is working if it is catched. Okay, so if and only if it is catched. If you do not catch it, let's say after error, okay, so let's do this. Okay, now if I do not have a catch, what happens then? Did it work the same way? Let's check, or maybe something other would be. Okay, so it's not coming, right? Getting the point? Okay. So yeah, this is all for the day. Okay. Try it out, learn it, check it. Okay, and then let's meet on, I guess, day after tomorrow. Okay. Okay, Tabis. Right. Yeah, go on. The point is, if you like, once it is clear, promise, Ajax, and all these things. So the point is, it should be clear. The concept should be clear. That's it. Nothing else is required. If your concept is clear, so if you know how to write it in the code, implement it in the code, so that is what matters. So if you are able to write, that's it. Yeah, that would be sufficient. And like, as I have also included links in the document, you can also refer to that. So MDN docs are there. Mostly MDN docs are there, right? And some other links from here and there from the net. Okay. Yes, yes. So you can study like, okay. So did you get the point which I taught today? Like, we had a separate class for promises itself. Okay. So I hope you are getting the point. We'll learn more about this. Okay. Don't worry. And yeah. So if you are able to write the code, that is the indication that you understand the part. Okay. Yeah, yeah. So if they involve promises,
like do API calls, then that will be really helpful for you. Okay. 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 Let's meet day after tomorrow. Bye.